हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो किस तरह से न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, हम इसके मेथड्स पढ़ रहे थे। हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने 2 टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ा था। एक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। एक इंडिविजुअल से जब नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उसको हमने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब 2 पेरेंट्स और 2 इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तब उसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, and in sexual reproduction 2 male and female parents are required to produce new offsprings. Asexual reproduction में हम लोगों ने लास्ट क्लास में 2 मेथड्स पढ़े थे, एक था फिजन और एक था बर्डिंग। फिजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड होकर के 2 और मोर इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा था। फिजन 2 टाइप का पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन और एक था मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड होकर के 2 इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा था, 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा था। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था अमीबा और पैरामीशियम। और सेकेंड टाइप हमने पढ़ा था मल्टीपल फिजन, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर के बहुत सारी डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रहा था। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था प्लाज्मोडियम और मलेरियल पैरासाइट। इसके अलावा हमने अमीबा में भी देखा था कि अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन होता है। साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था बर्डिंग, जिसमें हमने देखा था कि बर्ड लाइक एक प्रोजेक्शन बॉडी से प्रोड्यूस होता है, अराइज होता है, और ये बर्ड जो होती है वो न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करती है और बाद में ये अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनता है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था हाइड्रा और ईस्ट को। हाइड्रा मल्टीपल ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें बर्डिंग की प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है, न्यू इंडिविजुअल बनता है। और वो ईस्ट जो है वो सिंगल सेल होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी बर्ड से न्यू इंडिविजुअल बनता है। इसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं और वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा से जनरेट होना। In this method, a part of the body of the organism, if cut or broken, can develop into a new individual. Regeneration method में क्या होता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसी भी कारण से कट जाती है या टूट जाती है, तो उसका हर कटा हुआ भाग और टूटा हुआ भाग जो है वो नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये प्लेनेरिया, आप देख रहे हैं इस डायग्राम में प्लेनेरिया को शो किया गया है। ये प्लेनेरिया है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये इंडिविजुअल है और यहाँ पर इसकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट में कट हो रही है या डिवाइड हो रही है। और हर पार्ट जो है आप देखेंगे, ये पार्ट जो है ये ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल बना रहा है, ये पार्ट जो है ये ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल बना रहा है, और ये पार्ट जो है ये भी ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहा है। इस डायग्राम में हम हाइड्रा में रीजनरेशन देखेंगे। ये हाइड्रा की बॉडी है, इंडिविजुअल है हाइड्रा। यहाँ पर इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, एम्पुटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम देखेंगे हाइड्रा की बॉडी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। और यहाँ पर हर पार्ट जो है, ये देखिए यहाँ पर इस पार्ट से ये नया इंडिविजुअल बन गया, इस पार्ट में ग्रोथ हुई तो उससे भी क्या हुआ, नया इंडिविजुअल बन गया, और ये ग्रो करके अपने इंडिविजुअल की तरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि बॉडी जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है और हर पार्ट जो टूटा हुआ पार्ट जो है, इसका ब्रेक पार्ट जो है, कटा हुआ पार्ट जो है, वो ग्रो करके नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर भी सिंगल इंडिविजुअल जो है वो रीजनरेशन प्रोसेस से 2 न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये रीजनरेशन की जो प्रोसेस होती है ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा होती है और इन सेल में प्रोलिफरेशन होता है और प्रोलिफरेशन होने से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, सेल का मास बन जाता है और सेल के इस मास में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस होने के बाद में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स और टिश्यूज बन जाते हैं। ये सेल्स जो होती हैं वो वेरियस टाइप की सेल्स और टिश्यूज को बना देती हैं और ये जो चेंजेस होते हैं
ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में होते हैं और जिसे डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम रीजनरेशन को देखें तो रीजनरेशन जो है वो रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं है और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में इस मेथड से रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो कट होकर के, डिवाइड होकर के न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म नहीं करती है। इसीलिए जो रीजनरेशन होता है इसको रिप्रोडक्शन जैसा नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो इसी मेथड से, रीजनरेशन के मेथड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। Asexual reproduction का next method है fragmentation. In this method, the body of a simple multicellular organism breaks up into smaller pieces on maturation and each fragment develops into new individuals. Example is Spirogyra. इस मेथड में जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनकी बॉडी स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है और हर पीस जो होता है वो मैच्योर होकर के, हर फ्रेगमेंट जो है वो मैच्योर होकर के नए इंडिविजुअल को बनाता है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। इस फिगर में आप देखेंगे कि स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन को शो किया गया है। इस फिगर में ये आप देख रहे हैं कि स्पाइरोगायरा की फिलामेंटस बॉडी है। इसमें आपको मालूम है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। इसकी बॉडी जब फ्रेगमेंट होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्रेक होकर के ये टू अलग अलग पीसेस में, स्मॉल पीस में ये ब्रेक हो रही है और हर पीस जो है, यहाँ से ये पीस जो है ये ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल को बनाता है और ये पीस जो है ये भी ग्रो करके क्या करेगा, न्यू इंडिविजुअल को बनाएगा। तो स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से होता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो स्पाइरोगायरा में सिर्फ सेल्स होती हैं जो कि एक ग्रुप में रहती हैं और हर सेल जो है वो इंडिविजुअल अपना फंक्शन करती है। लेकिन अगर हम दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ज़्यादातर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सिर्फ सेल्स का ग्रुप नहीं होता है, बल्कि स्पेशल फंक्शन करने के लिए जो सेल होती हैं वो ग्रुप बनाती हैं और टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं। टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स मिलकर के क्या करते हैं, बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ अगर हम सोचें कि सेल, ऐसे जो वेल ऑर्गेनाइज्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो। इसीलिए जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो है वो दूसरे कॉम्प्लिकेटेड मेथड से होता है। Asexual reproduction का next method है spore formation. In this method, structures called sporangia produce tiny cells called spores. When the spores come in contact with a moist surface, it develops into new individuals. Example: rhizopus, mucor, penicillium, etc. इस मेथड में इंडिविजुअल में कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको स्पोरेंजिया कहा जाता है और इन स्पोरेंजिया के अंदर स्मॉल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, टाइनी सेल्स बनती हैं और उन सेल्स को कहा जाता है स्पोर्स। जब ये स्पोर्स किसी भी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं, ग्रो होते हैं और एक नए इंडिविजुअल को बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम। राइजोपस आप लोगों ने कॉमनली ब्रेड के ऊपर जब देखा होगा कि ब्रेड खराब हो जाती है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, तो वो राइजोपस होता है। क्या होता है, राइजोपस जो है वो ब्रेड के ऊपर लेयर बना लेते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे, राइजोपस में ये स्ट्रक्चर को राइजॉइड्स कहा जाता है। राइजॉइड्स फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सबस्ट्रेटम के अंदर रहते हैं और वहां से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये पार्ट जो है ये स्टोलोन है और ये हाइफी जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बहुत सारे हाइफी मिलकर के माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो एरियल हाइफी रहते हैं इन्हीं के टिप पर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है और जिन हाइफी पर स्पोरेंजियम बनते हैं उनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर के टिप पर स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं और इन स्पोरेंजियम में फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं।
ये स्पोर्स जो रहते हैं टाइनी सेल्स होती हैं, इनके चारों तरफ थिक वॉल होती है जो इनको एडवर्स कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोटेक्ट करती है। जैसे ही इन स्पोर्स को मॉइस्ट सरफेस मिलती है, ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। Asexual reproduction का next method है vegetative propagation. In this method, new plants are produced from the vegetative parts of the plant like root, stem or leaves. Example from roots dahlia, sweet potato, from stem potato, ginger, from leaf bryophyllum, begonia. इस मेथड में नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स से। वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स होता है प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ करके प्लांट्स के बाकी के पार्ट जो वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर को छोड़ करके प्लांट के बाकी के जितने भी पार्ट है, जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, ये सब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि रूट, स्टेम और लीफ जो है वो नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम देखें, रूट्स से न्यू इंडिविजुअल कौन से प्लांट्स में बनते हैं? डहेलिया है, स्वीट पोटैटो है, इनकी रूट्स से नए प्लांट बन जाते हैं। स्टेम से देखें तो पोटैटो, जिंजर है, ये इनसे नए प्लांट्स बनते हैं। या आपने रोज देखा होगा, रोज में भी हम कलम लगाते हैं तो वहां पर स्टेम से नया प्लांट बनता है। Plants produced by vegetative propagation produce flowers and fruits earlier than those produced from seed. वो प्लांट जिनमें की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है उनमें फ्लावर और फ्रूट्स जो होते हैं वो उन प्लांट्स से पहले लग जाते हैं जिन प्लांट्स में न्यू इंडिविजुअल सीड से प्रोड्यूस होते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस्ड होते हैं। It also helps in the propagation of plants which do not produce seeds like rose, jasmine, banana, etc. और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो उन प्लांट्स के नंबर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है जिनमें कि सीड्स से नए इंडिविजुअल नहीं बनते हैं या सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है या ये प्लांट सीड को प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे कि रोज है, जैस्मीन है, बनाना है, इनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं। Vegetative propagation can also be done artificially by cutting, layering, grafting, etc. वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है कुछ आर्टिफिशियल मेथड से भी कराया जाता है, जैसे कि कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है। जब आप इन लीव्स को देखेंगे तो लीव्स में आप देखेंगे यहाँ पर ये लीफ है, यहाँ पर ये लीफ है। ब्रायोफिलम की लीव्स में यहाँ पर ये नॉच प्रेजेंट होता है और यहाँ पर छोटी छोटी एडवेंटिशियस बर्ड होती हैं। जब ब्रायोफिलम की लीफ सॉइल में गिर जाती है तो इसमें यहाँ पर जो स्मॉल बर्ड्स होती हैं वो ग्रो करके सॉइल सरफेस से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और ग्रो करके छोटी छोटी सी जो बर्ड्स होती हैं ये न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से लीफ से नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं और ये मेथड जो है ये कौन सा मेथड है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। The asexual mode of reproduction can take many forms: fission, fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation, and spore formation. Wow! So many ways of reproduction. True. But let's begin at the very beginning. Can you think of a simple unicellular organism? How about amoeba? Good example. Amoeba is a unicellular organism that reproduces by cell division. You mean a cell dividing into two or more cells? Exactly. It is also called fission. The mother cells divide to form the daughter cells. Many different patterns of fission have been observed in amoeba. In fact, in organisms like amoeba, the splitting of the two cells during division can take place on any plane. This is called transverse binary fission. Oh, so do all unicellular organisms reproduce like that? Not really. Let's look at a unicellular organism that has a more organized body design. For example, the Leishmania. Leishmania have a whip-like structure at one end of the cell.
binary fission occurs in a definite orientation in relationship to the whip-like structures. Leishmania? The name sounds very familiar. Probably because it causes black fever. Oh, Interestingly, the malarial parasite, Plasmodium, is also a unicellular organism. Plasmodium, however, reproduces by multiple fission. That is, it divides into many daughter cells simultaneously. amazing how dangerous these small unicellular organisms can be. Not always, though. Yeast is also a unicellular organism. Yeast, by the way, produces small buds that separate and grow further. And how about multicellular organisms? Do any of them reproduce like unicellular organisms do? Well, multicellular organisms can reproduce asexually as well as sexually. But to answer your question, some of the reproductive methods used by unicellular organisms do work with multicellular organisms that have relatively simple body organization. Remember the slimy filamentous green masses that you can see developing on the surfaces of some ponds? That's Spirogyra. Spirogyra reproduces by fragmentation. It simply breaks up into smaller pieces upon maturation. Ah, so each piece or fragment grows into a new individual. That's right. What about other multicellular organisms? Why can't they reproduce by fragmentation? Because they are not just a random collection of cells. They consist of specialized cells organized as tissues. Tissues are organized into organs, placed at definite positions on the body of the organism. Cell-by-cell division wouldn't lead to another individual in such cases. Like human beings. Can you imagine a brain cell breaking off and developing into a complete human body? No. I see what you mean. So what happens in reproduction of such organisms? They use more complex ways of reproduction. There is typically a single cell type in the organism that is capable of growing, multiplying, and creating other cell types under appropriate conditions. This can happen through regeneration, budding, vegetative propagation, and spore formation. Regeneration involves development of new individuals from body parts. For example, consider fully differentiated organisms such as Hydra or Planaria. These can be cut or broken down into many pieces. Each of these cut pieces can grow into separate individuals. How does that happen? Remember I was telling you that multicellular organisms have specialized cells for reproduction? Yes, that's right. So specialized cells are involved in regeneration. Exactly. These cells proliferate into a large number of cells. From this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues. I can't imagine an organism depending on being cut up to be able to reproduce. Can you?
regeneration is actually not the same as reproduction. I decided to read up a bit more on it and found that Hydra and Planaria can reproduce in other ways as well. By the way, regeneration is also called morpholepsis. So if not cut up, how would an organism like Hydra reproduce? Good question. Organisms like Hydra can also reproduce by budding. They use regenerative cells for reproduction in the process of budding. How's that? In Hydra, a bud develops as an outgrowth due to repeated cell division at a specific site. Each such bud develops into tiny individual Hydra. Oh, so I guess they detach from the parent body when fully mature and become independent individuals? Exactly. Now let's get back to your original question about what I'm planting here. Can you tell me which out of these plants reproduces asexually? I guess the rose plant. You planted just the stem. That's right. Rose plants reproduce through vegetative propagation. Vegetative propagation involves production of new plants using the vegetative parts of an existing plant. Can you recall some other plants where the stem is used for vegetative propagation? Let me think. That looks like something you could grow from a stem. How about sugarcane? Very good. You can grow a new sugarcane plant from a part of the stem of the parent plant. In fact, a similar method of vegetative propagation can be used for bananas, oranges, and grapes. But what's that you have there? You seem to have tied two rose stems together. Oh, that's called grafting. Through grafting, you can take vegetative propagation one step further and get some desirable characteristics in your plant. In grafting, the tissues of one plant are encouraged to fuse with those of another. I grafted the stems of roses of two different colors. I'm hoping to get a rose in a different shade as the characteristics of the two roses combine through grafting. You know, grafting is used in some interesting ways. Sometimes gardeners graft related potatoes and tomatoes so that both are produced on the same plant, one above the ground and one under the ground. An amazing concept, isn't it? That sounds really cool. But how about propagation through a leaf or a bud? Come over here. Let me show you. This is a bryophyllum leaf. See the buds on the tip of this leaf? When this leaf touches moist soil, each bud grows into a new plantlet. These plantlets eventually drop off and root. Wow. That could produce a lot of plants. But let's go in for a bit. I am hungry. Can I have some buttered toast? Quite a few plants here. Now, do any of these propagate like the rose plant? Let's see. Marigold requires seeds. How about the money plant? Of course, I have seen Arnold's mom put a stem of a money plant in a bottle of water and
it grows into a plant. And the good thing about it is that a money plant can be planted around the year. But be careful when taking a cutting. Look for the nodes which have roots coming out of them. These are easier to plant and they have more chances of growing. Let's now get back to Arnold and his mom. Can you guess which other food plant propagates using its buds? Your favorite vegetable, potatoes. Potato itself is a horizontal plant stem with shoots and roots usually underground. Thus, the stem serves as a reproductive structure. Such horizontal underground plant stems are called rhizomes. Look at this potato here. See those buds and notches? If you cut a potato into small pieces, each with a bud or a notch, and place them on a moist cotton piece, each piece could produce a new rhizome in a few days. That's quick. Don't seeds take a long time to produce new plants? They do. Vegetative propagation is generally faster than sexual reproduction. That's one of its advantages. Can you think of other advantages of vegetative propagation? Well, it requires only one parent, doesn't it? Good observation. But there's more. Let's figure out what the other advantages can be. Remember, plants like bananas and roses have lost the capacity to produce seeds. Vegetative propagation helps in reproduction of such plants. Lastly, observe this rose plant and its parent plant. Can you make out any significant differences? Not really, right? Plants produced through vegetative propagation are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics. Okay, now for your breakfast. And where's the bread? Here it is. Looks like we forgot to keep it in the fridge last night. It seems to have something growing on it. Uh-oh, we can't use this bread. It's gone moldy because we left it outside in moist air. This stuff is called mold? In biological terms, it's called a rhizopus. Rhizopus is a simple multicellular organism. Rhizopus or bread mold can grow when bread is exposed to moist air. Remember, I told you there are two methods of asexual reproduction in plants. Yes, of course. One is vegetative propagation and the other is through spores. Very good. The growth of this mold is an example of asexual reproduction through spore formation. Let's see if we can identify the specific reproductive parts of this rhizopus. Take a close look at this mold. It grows on the bread in the form of thread-like structures called hyphae. So where are the spores that help it reproduce? See those tiny blob on a stick kind of structures? Yes, they seem similar to the stamen that we see in flowering plants. These blobs are known as sporangia, and these are the structures involved in reproduction. They contain cells or spores that can eventually develop
into new rhizopus individuals. These spores are very light. They are covered by thick walls that protect them. So how exactly do these spores develop into new rhizopus? When the sporangia mature, they release spores. These spores keep floating in the air and eventually attach themselves to a surface that is moist, and then they start growing. Can you figure out which of the plants here reproduces with the help of spores? Let me see. Don't these ferns have spores? Correct. A fern is a rhizopus that uses spores to reproduce. Now, since there's no bread, let me make you some pancakes for breakfast. Well, let's leave Arnold to enjoy his breakfast. Meanwhile, I have some more interesting information for you. I read about a new advancement in technology that gives us another asexual method for the propagation of plants, tissue culture. The interesting thing about tissue culture is that it enables us to produce exact copies of plants in sterile conditions. Just think, this technique can enable production of exact copies of plants in the absence of seeds, help us produce plants from seeds that otherwise have very low chances of germinating and growing. For example, in the case of orchids and nepenthes. Enable us to clean a plant of viral and other infections and quickly multiply. Let's take a quick look at how tissue culture is done. Tissue, or separating cells, are removed from the growing tip of a plant. The removed cells are placed in an artificial medium where they divide rapidly to form a small group of cells called callus. The callus is transferred to another medium that contains hormones for growth and differentiation. Here, each callus grows into a plantlet. Each plantlet is then placed in the soil so that it can grow into a mature plant. So, that was a great session on methods of reproduction in living organisms, wasn't it? You learnt about the various methods of asexual reproduction in unicellular as well as multicellular organisms. अभी तक हम के जितने भी मेथड पढ़े, जैसे हमने पढ़ा फिजन, बर्डिंग, इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो इन सब मेथड में हमने देखा सिंगल इंडिविजुअल ही अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये सभी मेथड जो थे वो थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.